From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 9. Presented by Amity University. Powered by RP Sanjeev Goenka Group. Century Ply. MYK Laticrete Tile Adhesives. And Samsonite. Good evening and welcome, viewers. Last night I brought you live the whistleblower in the sensational SSR case. The insider who performed the autopsy of SSR and said live on television before all of you watching that 101% it was a murder. Viewers, tonight I bring you the whistleblower in the most sensational financial scam of the last decade live with me on my program in my studio. The scam is one in which the once high-profile ICICI Bank CEO and MD Chanda Kochhar has been arrested last week. Yes, it is the scam in which Venugopal Dhoot of Videocon, who made huge fortunes during the Congress Party's government, is also now in jail. Dear viewers of Republic, you know that since 2010, when I broke the CWG scam and followed it up with a series of scams leading up to the Anna agitation of 2011, I have particularly enjoyed piecing together cases of financial fraud, financial deception and deceit. And tonight I find a similar case in many overvalued, overhyped and overvalued companies who I'm sure we will at Republic expose in the course of time. But for tonight, my question is this. Were Chanda Kochhar and Venugopal Dhoot acting alone? Was Videocon the only company? And Chanda Kochhar the only individual? The only banker who took advantage of the culture during the Congress government? Were the money of poor Indians locked in banks, backed by government-issued licenses, and government backing and government trust? In effect, your money, people's money, your savings, your interest, the future of your families was swindled by business houses with political links who were fronts for extracting the money either out of India through some routes or into the hands of corrupt politicians and corrupt business houses and corrupt business persons. Viewers of Republic, the so-called business media in India does not ask these questions. They will report the arrest of Chanda Kochhar and Dhoot, but not reveal or investigate a possible political hand in either these specific transactions or transactions close to them. And my gut feel is that without political patronage, such corruption cannot happen, does not happen. And I will therefore, with my team, be using this case and these arrests as the starting point of a bigger investigation. When we investigate at Republic, either SSR or such financial scams, the corrupt and the guilty and those guilty fight us back. With your support, we at Republic will fight back harder and we will beat them. Ladies and gentlemen, the whistleblower in this big financial scam is live with me at 10 o'clock tonight. You cannot miss this one. Is the inside story. The inside story India's so-called pink media does not use black ink to write about. Ladies and gentlemen, my first debate tonight. Reject the selective Hindus. A.K. Antony now says,
we need Hindus as a vote bank if we are to win elections. How tragic, Mr. Anthony, that you are talking of using Hindus as a vote bank so openly. Ladies and gentlemen, debate number 3 this evening on a packed show. Is it time to correct the history books and an effort being made by the government, which will be in practice in step 1 next month onwards? That's the last debate, and here are the headlines this Wednesday evening on the Debate Tonight. In a sudden realization, senior Congress leader, CWC member, Sonia Gandhi's right-hand man says, A.K. Antony says minority votes will not be enough for the Congress party. They need the Hindus to fight Narendra Modi. The Congress party mocked and ridiculed Hindus, declared Rahul Gandhi as Lord Ram, and now says we need to bring the Hindus, get the Hindu vote if we are to get back to power. ICICI Videocon loan fraud case explodes as the political link is now becoming the focus of investigation. The man who blew the lid of India's biggest scandal, biggest financial scandal of India Inc., is joining me at 10 p.m. tonight. Central government confirms corrected history will be made part of the curriculum as early as next month onwards. And Prime Minister Narendra Modi visits his ailing mother in an Ahmedabad hospital. The hospital says her condition is stable. In every picture with Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Robert Vadra and Priyanka Gandhi, there is a person called A.K. Antony always there. Right-hand man of the Vadra Gandhi family. Now Mr. Antony has had a sudden realization and a sudden epiphany. He says that the Vadra Congress needs the majority. Minority is not enough, he says. He says the Vadra Congress needs the Hindus. They need Hindus. They need Hindu votes to win elections. This sudden realization, ladies and gentlemen, comes after the party has gone down to 50 seats in parliament. Can we forget the past? Let's debate. A top Congress leader has had an epiphany. Indian ജനങ്ങൾ നാനാജാതി മതസ്ഥരാണ്, ജാതിക്കാരാണ്. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം നമ്മൾ കൂടെ നിർത്തണം. ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ. ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടി മോദിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം. അതിന് എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പാലിക്കണം. Just 15 months to the general elections, the Congress has had a realization that Hindu votes are essential. മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ, നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ, ചന്ദനക്കുളിയിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർ മുതിർ ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. അതെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഒരു ആരാധന തുടരാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭൂരിപക്ഷപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അവർ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകാനും അവർക്ക് കളഭക്കുറി ചാർത്താനും ചന്ദനക്കുറി ചാർത്താനും തിലകം ചാർത്താൻ അധികാരവും. അതാണ് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് വീണ്ടും മോഡി തിരിച്ചുവിടും. And now the desperate party is trying to revamp its image ahead of the election. जो मुसलमान बूथ हैं वहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ, और अगर वहाँ 50-60% हुआ, ये क्यों हुआ? 60%, 90% क्यों नहीं हुआ?
इसका पोस्टमार्टम पिछले चुनाव का करना बहुत जरूरी है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे। It's a pre-election gimmick by the same party that went overboard to run down Hindus. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? I can see it in Hindutva. कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। It's clear that there is a hunger for Hindu votes. This clearly shows that the Congress party, for very long, in the name of pseudo-secularism, has only practiced vote bank politics and targeting Hindus because Hindu ko do gali taki mile vote bank ki tali is the standard operating procedure of the Congress. Those who mocked and ridiculed Hindu pride have been compelled to take note. Let's debate. Acharya Pramod Krishnan of the Congress party is on a debate with Shazia Elmi of the BJP. Acharya Pramod Krishnan, this is itself an insult. Yes. And it is so interesting that A.K. Antony was caught on tape. You know, otherwise you say these things in your party meetings, people don't get to know. But look at the way your party talks. We can't win elections only with minorities. We need to keep the majority in our flock. Just keeping minorities is not enough. The majority is of Hindus. Now, along with the minorities, we must bring the flock of the majority to fight Modi. So basically, you are now saying that you need Hindus to fight elections, right? You need Hindus to fight elections, and I wonder how Hindus will feel about this. How can you talk about 100 crore people like this? Unko lao, get them with you. If you want to win the elections, minority is not enough. But anyway, how come this sudden realization? Acharya Pramod Krishnan. अर्नब, ए.के. एंटोनी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और जो बात उन्होंने कही है ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। और 2014 का जब चुनाव हारे थे तभी ए.के. एंटोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी आदरणीय सोनिया गांधी जी के द्वारा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि धीरे धीरे हिंदू विरोधी बनती जा रही है, जो हमें बहुत नुकसान दे रही है। इसलिए इस विषय पे गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। मैंने भी देखा पिछले कई सालों में कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से लड़ते लड़ते शब्दों से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कभी वो हिंदुत्व से लड़ते हैं, कभी वो जय श्री राम से लड़ते हैं, कभी भगवा से लड़ते हैं, कभी वंदे मातरम से लड़ते हैं, कभी भारत माता की जय से लड़ते हैं। तो ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उन्हीं लोगों की मगर ये बात है ना कि जो लोग बनावटी हिंदू है हमारे देश में, अभी ये कभी भी कहा गया है कि जैसे कांग्रेस पार्टी की ये बनावटी हिंदू है ना, जो चुन चुन के डिसाइड करते हैं इस केस में हिंदू बनते हैं, इस केस में एंटी हिंदू बनते हैं। मगर अभी देखिए ये सारी बात जो है शाजिया इल्मी बहुत सीरियस हो गई है, क्योंकि अभी टेप में वो पकड़े गए हैं, कह रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटी से के साथ काम नहीं चलेगा। और मैं अगर पूछूं शाजिया इल्मी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अब तक उनको लगा था कि हिंदुओं के बिना जीत लेंगे, ज़रूरत नहीं है, सारी माइनॉरिटीज़ हमारे साथ है। तो और अभी कह रहे हैं कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं चलेगा। जी अर्नब, व्हाट मोर एविडेंस डू यू नीड? इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? लोग रोजाना ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सवाल पूछते हैं और कहते हैं सेक्युलर नहीं है,
अब ये असली कम्युनलिज्म के जो प्रकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी, और ये साफ साफ दिख रहा है, एक बाकायदा एक सब उसको समझा जाए कि इकबालिया बयान. So in a way it's a confessional statement given by Mr. A.K. Antony that seeking minorities, treating them as numbers, treating them as election fodder is not enough. We need to use majority as well. So first of all, I disagree with this minority majority nomenclature. Two, I strongly protest against Hindus, my brethren, being used in this manner. And thirdly, I object to having my fellow brothers and sisters, Muslims, being used and having been used and have been used continuously as again vote bank constituents for this party. Now, this is for everybody to discern now forever who is a secular, which is a secular party, and who are the actual original vile communalists who have nothing to offer but using of one's religion and identity card. You are a member of minority, vote for Congress. BJP is for Hindus, we are for Muslims. What more evidence do you need? No, This there has is come from the a evidence very is senior- clear, but I want So this is you absolutely see disgusting. आचार्य प्रमोद कृष्णन, लोग इस सारी चीज़ को रिजेक्ट करेंगे. आप प्रोग्राम पे आके कहते हैं मैं भी बहुत दिनों से कह रहा हूँ अर्नब, मैं कांग्रेस पार्टी में चीख चीख के चिल्ला के कह रहा हूँ कि हिंदुओं के खिलाफ मत बोलो, हिंदू आस्था को चोट मत पहुँचाओ, हिंदुओं को गाली मत दो. आप हर बार बोलते हैं और आप कह रहे हैं आपकी पार्टी आपकी बात नहीं सुनती. मगर देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप भी तो सिलेक्टिव है ना, आप खुद भी तो सिलेक्टिव हैं, क्योंकि आपको तो पार्टी उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था जब आपके पार्टी ने कहा कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, और जब आपके पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दी कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, उसके बाद भी आपने कोई पोजीशन नहीं ली. आज आपको लग रहा है कि वाड्रा कांग्रेस के अंदर आप एक नहीं, मैं बात खत्म करूं शाजिया जी. देखिए, आपको अभी लग रहा है प्रमोद कृष्णन जी कि क्योंकि पूरे देश में एक बदलाव है और हिंदू प्राइड की बात लोग खुलकर बात करते हैं, आपको लग रहा है कि आप एक अपने पोजीशन पे 180 डिग्री का टर्न करके आप कहेंगे जो बात आप पूरी देश कह रही है, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कह रहा हूं पिछले कई सालों से, मगर कांग्रेस पार्टी मेरी बात नहीं सुनती. आप नहीं कहते, आप भी A.K. एंटनी जैसे ही हैं, क्योंकि जब रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया, जब उसको नकार दिया कांग्रेस पार्टी ने, आप पार्टी में चुपचाप चिपके रहे. आप भी तो वैसे ही है ना. ये जो कहते हैं, कोई कहे बनावटी हिंदू, कोई कहे सिलेक्टिव हिंदू, राजनीतिक तौर पर, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कह रहा. और आज आप देख रहे हैं कि हिंदू प्राइड देश भर में है. आप देख रहे हैं कि आज कोई स्वस्तिक के साइन को झाड़ू से मारने का फोटो कोई ट्वीट करे तो देश में क्या हाहाकार हो जाता है. सावरकर जी को गाली देते हैं तो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. आप देख रहे हैं मूड बदल रहा है. मगर मुझे एक बात बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आपकी अपनी पोजीशन क्या है? क्या बदलते हुए मूड के साथ अपने राजनीतिक जो आपके एम्बिशन से उसकी भी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? आप कहां थे जब अशोक गहलोत ने कहा था कि जय श्री राम एज अ स्लोगन इंस्टिल्स फियर एंड एंगर? आप कहां थे जब हिंदुत्व को गाली दे रहे थे हर जगह राहुल गांधी? तब आप कहां थे? अब भी देते हैं हिंदुत्व को गाली, आप कहां हैं? देखिए अर्णब गोस्वामी जी, आपने बहुत तीखे हमले किए, मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए और मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दूंगा. मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदू होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो भाजपा के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी में अगर है तब तो वो हिंदू है, और भारतीय जनता पार्टी में अगर नहीं है तो वो हिंदू नहीं है. कांग्रेस पार्टी में अगर मैं हूं तो क्या कांग्रेस पार्टी को मुझे छोड़ देना चाहिए? अगर कांग्रेस पार्टी के, हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, बोलिए.
कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं, और जो ए.के. एंटोनी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी यही कहा था, और ये बात सच है कि भारत की राजनीति में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे अगर चलना है तो धर्मनिरपेक्षता को अपनाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ मेरे मूल सवाल पर जवाब नहीं दे रहे, जो धर्मनिरपेक्षता मूल सवाल पर जवाब नहीं दे रहे, सीधी तौर से आप बताइए। मैं दूंगा। नहीं, आप देंगे क्या? आप मुझे नहीं दे रहे ना। देखिए, नहीं प्रमोद कृष्णन जी, जब 26/11 आरएसएस की साजिश की बात दिग्विजय सिंह जी ने की तो आप कहां थे मान्यवर? जब कहा 26/11 आरएसएस की साजिश, अगर आप कांग्रेस तब आप कहां थे मान्यवर? सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी की नहीं कर, मैं कह रहा हूं आप भी तो उसी तरह के सिलेक्टिव हिंदू है ना, आप भी तो राजनीतिक हिंदू हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने आप को आचार्य कहे कुछ कहे, मगर आप भी तो उसी तरह का की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे बताइए आप। नहीं अर्नब, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ना मुझे बीजेपी का सर्टिफिकेट। नहीं, मगर आपकी पार्टी तो खुलकर कह रही है ना मुझे अर्नब गोस्वामी। नहीं, आपकी पार्टी खुलकर कह रही है कि हिंदुओं का इस्तेमाल करो। सवाल कर रहे हैं तो आपकी पार्टी कह रही है हिंदुओं का इस्तेमाल करो। सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं कह रहा हूं आपकी पार्टी कह रही है कि हिंदुओं का इस्तेमाल करो। बात कर, जब तक आप हिंदुओं का इस्तेमाल नहीं करोगे आप पावर में नहीं आओगे। ऐसा नहीं कहा तो है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, अगर आप एक तरफा बात करेंगे ना तो इस बात का निचोड़ नहीं निकलेगा। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिएगा। आप मेरा जवाब सुने बिना आप साजिया के बीच में ले आए, फिर आपने हमले शुरू कर दिए। तो क्या आप ये चाहते? नहीं, तो फिर आप करिए, आप करिए ना। नहीं, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। सवाल ये है कि आपने सवाल किया, मेरे जवाब सुने बिना आपने दूसरा सवाल कर दिया। फिर मैं जवाब दे रहा था, आपने तीसरा सवाल कर दिया। आप मुझसे कितने ही सवाल करिए, तीखे सवाल करिए, मैं उस सबका जवाब दूंगा, लेकिन मेरा जवाब तो सुनिए। मैं यही जवाब देना चाहता हूं जो ए.के. एंटोनी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो रघुपति राघव राजाराम गाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूं। नाम बताइए। तो क्या अगर वो कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, नाम बताइए कौन है हिंदू विरोधी? कौन है नेता ऐसे हैं हिंदू विरोधी? कौन नाम से चिढ़ है? हिंदू विरोधी नेता ऐसे हैं हिंदू विरोधी कौन है? वजह से मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ दूं? हिंदू विरोधी कौन है? और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हिंदू विरोधी कौन है? आप तो प्रियंका गांधी के, प्रियंका वाड्रा के बहुत बड़े सपोर्टर है ना, तो ये बताइए, प्रियंका वाड्रा ने तौकीर राजा को बहुत स्पेशल पोजीशन दी थी, उनका समर्थन किया था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, है ना? प्रियंका वाड्रा ने तौकीर राजा को वहां पे उठाया था, पोजीशन दी थी, बाहर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाकर उनको सपोर्ट किया था। और तौकीर राजा ने क्या कहा था कि भाई हम हाथ में ले ले कानून तो हिंदुओं को कहीं पे रहने की जगह नहीं होगी। तब बताइए, आप बताइए मुझे कि आपने क्या कहा? कि आपने पार्टी को छोड़ा? कि आपने प्रियंका वाड्रा को कहा भाई ये क्या हो रहा है? हिंदुओं को इस तरह की जो थ्रेट दी जा रही है कि आप रहने कहीं नहीं, आपको भारत छोड़ देना पड़ेगा, भारत में कहीं रहने का जगह नहीं होगा, ये सब जब तौकीर राजा ने कहा तब आप क्या पोजीशन ले रहे थे? आज तो आप बहुत सिलेक्टिव हिंदू बन रहे हैं हमारे प्रोग्राम पर। ही इज नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। मिस्टर श्रीराम, आर यू सीइंग? Mr. Sriram, he's avoiding my question. No, he's avoiding my question, Mr. Sriram. No, he's avoiding my question, Mr. Sriram. Pretty much. Yeah, I'm only wanting to recall Veer Savarkar's statement. No, one touch my time, sir. Veer Savarkar, I'm only reminded of Veer Savarkar's statement. The day Congress feels that Hindu vote matters, they wouldn't mind wearing a janu over their coat and come and see quotes. I'm able to remember that, and that looks like it's round the corner. They call a man who says Sabka Saath, Sabka Vikas a communal. They call him a neech aadmi. They call him a Modka Saudakar. And then they come and talk about the citizens of India as Hindus and minorities and Muslims, and this is the real communal phase of Congress. It's a car without a driver. It doesn't have direction. It doesn't have vision. It's bloody meandering all around the place. So that is the actual position of this party, and the real communal phase of this party is right out and open, not by any small leader, a man who's probably the second in command, tries to talk or addresses the citizens as Hindus and Muslims. No, shame on this party, which calls Prime Minister a neech aadmi. Shame on this party. No, Pramod Krishnan, people are not forgiving you. आप जितना भी कोशिश करें प्रमोद कृष्णन जी, आपके पार्टी को कोई माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी कौन सी पार्टी है?
जिस पार्टी के आप बहुत बड़े नेता हैं, आप प्रियंका वाड्रा को एडवाइस करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, जब तौकीर राजा को ज़रूर आपने ही वहाँ पे गद्दी में बिठाई थी, उनका समर्थन करने में आपका ही हाथ होगा। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं टीवी पर आप देख रहे हैं। आप वही व्यक्ति हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, बुरा न माने, आपके सामने ही कह रहा हूँ, मैं पीठ पीछे बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, जो आप बहुत खुश थे जब कांग्रेस पार्टी ने कहा हिंदू टेररिज्म, है ना, जब हिंदू टेररिज्म की बात कही और सैफरन टेररिज्म की बात कही और ये झूठ बोला और हिंदुइज्म के खिलाफ इस तरह से ओपन आक्रमण कर दिया, खुलकर आक्रमण हिंदुओं पर, हिंदू आस्था पर आक्रमण किया आपके पार्टी ने, कह के कि हिंदू आतंकवादी है। और आज कह रहे हिंदुओं की जरूरत है, वी नीड द हिंदूज। नहीं, आज कह रहे हैं टुडे पीकेडी नाम्बियार, they are saying we need the Hindus, without the Hindus we can't win an election, we must do something. Oh, well, Arnab, I wanted to remind you and all your viewers, this is not the first time AK Antony said this. Maybe he has said it in a public platform, like as a speech. He has outrightly said that to the congressmen, go and now appease the majority Hindus. But you remember about 20 years back when he was the Chief Minister of Kerala, he went on to say that the Congress should stop appeasing the Muslims and Christians and also Mr. should Nambiar, support the you don't Hindus. know anything. Then he lost his kursi. He lost his chair. Mr. Nambiar, you don't know anything. The chief ministership. The fact is that RSS is affiliates in BJP with their foxy and cunning designs have been successful in painting Congress party as anti-Hindu and pro-Muslim. This was by design. Narendra Bhai Modi knew well that unless this misleading and untrue impression is created in the minds of the people, BJP can never get clear majority in the parliament. Therefore, there is a strong need to counter the bogus and deceitful perception from the public mind. And Antony ji has very rightly underlined this important point. Mr. Nambiar, just please read history of the Congress party. And saying that he is becoming the Ram. No one in the Congress party was ever anti-Hindu. AK Antony knowingly or unknowingly has actually told the world what was behind the camera, what was happening in the Congress over the last 30 years of real one at a time. My question to Sabir Siddharth Ghaffar of the All India Minority Council, who is the president of the All India Minority Council, is this. And please come into the debate with Mr. Sriram. Mr. Sabir Siddharth Ghaffar, you are the president of the All India Minority Council. Suppose the Congress party had abused and attacked Muslims and targeted Muslims and insulted Muslims and called all Muslims terrorists, right, and made these kind of comments, and after losing the elections would have come and said, no, we need the Muslims to win the elections. Would the Muslim community have forgiven them? See, sadly, the fact of the matter is that the minorities have become like a boxing bag of the country. The Congress leaders, in order to... Sir, can you answer my question, Mr. Ghaffar? You are coming with a prepared comment. My question was very specific. I'll repeat myself, Sabir. My question was that if the Congress party would have no. Just allow me. The minorities have always been targeted by the Congress government also. No. My question is, suppose the Muslim community would have been attacked, stereotyped, negatively, abused, right, targeted, right, in the way that the Congress party has attacked Hindus for decades. And now, if they had done that to the Muslim community, and then later they would have said, listen, we need the Muslim community with us to win the elections. Would the Muslim community leaders, including you, have come and said, all is forgotten, now you need us politically, you have attacked us for decades, we'll forget that and we'll support you politically? Would you have done that, Sabir?
Nothing is forgotten or forgiven in history. That's the point. Nothing is forgotten That's the or point. forgiven in politics or in Absolutely. history. That's the point. But we will all have to come together for the sake of the country. Of course we'll For the sake of the country, we all have to come together. We will have to come together. No, the Muslims have been forgiving the Congress. Sabir. The Muslims have been forgiving the Congress. Sabir. You see, Sadhvi Pragya is saying that every Hindu should be carrying a sharp weapon. No, this is the type of politics which this country is witnessing. And today the Congress leader, who has had a history of anti-minority statements, this particular leader has a history of anti-minority statements. He tries to hide the inefficiency of his party, the failure of a yatra on the being pro-minority. No, why the yatra has failed we'll go into later. But now the specific question is this: how will the people look at this? Now, please calmly think about it, Acharya Pramod Krishnan. Come back to the debate. I'd like to have Acharya Pramod Krishnan and Pankaj on the right, and Shazia and Mr. Sriram on the left. My question is this. You know, this whole obsession with the word minority, yeah, treating Muslims as minority, and the entire academia or the media, sections of it, just talking about that as if there is nothing else left for the Indians to relate themselves to. There is never any talk of development, governance, and that's all Congress has done. And not just Congress, all these fake secular parties. It's time that people start calling them the communal parties. They are the communal parties because they have not done any good for the Muslims as well either. So just treating somebody as a member or votary of his faith, is it enough? And I find it disgusting that all these people sitting here who are now in a BJP fix is secular. Congress party is communal. Has been called out by a senior functionary. Don't have the guts to say that they were wrong in just blaming BJP all these years and calling it communal, knowing very well that all the parties, whether it's RJD or Samajwadi Party or Aam Aadmi Party or the grand old party, the Congress, has just made themselves fatter and richer because of the votes of Muslims, having done nothing for them. So please, let's redefine who are the secular parties of this country, who stand by every Indian audio's bad. Shazia, I'm going to come back. Shazia, let me fix that. Of course, Shazia is calling the Congress party communal. I would like to give you an example, Pankaj. मेरे को ज़रा ध्यान से सुनिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी. कांग्रेस पार्टी जो अभी कह रही है हिंदुओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, हिंदू वोट को किसी तरह से लाइए क्योंकि जैसे सिर्फ माइनॉरिटी वोट से काम नहीं चलेगा. तो सवाल मेरा ये है, जो हिंदू आज एक सवाल आपसे करेंगे, ये करेंगे आपसे सवाल कि 2017 में कांग्रेस पार्टी की एक नेता ने, है ना, स्लॉटर्ड अ काव, एक गाय को यानी कि बछड़े को in broad daylight. I think this happened somewhere in Kerala. And they had given Kerala. It happened in my तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि इनकी कोई नहीं मैं had been given promotion, Arnab. They had given promotion. So people who have butchered a calf on the main. My point being, I'll make the point, PKD, and Pramod Krishnan, listen to me. You will have to reply now. Now that you have come on my program, you have to reply. The Hindus watching the program will say, Mr. Pramod Krishnan, your party's leader wanted to make a point against the beef ban. First of all, there was no beef ban, but they manufactured this and they said we want to protest. And what did they do? They took a Congress leader took a calf, in fact, took in the middle of the road and slaughtered it by cutting its neck. And you know that cows are sacred for Hindus. And the poor animal, the blood was spilled all over the road like a river. PKT, let me complete because we'll speak over each other otherwise. The blood of the cow, like a river, was flowing through the entire road in public.
याद रखिए, लोग आपको कैसे माफ करेंगे? आप वही पार्टी है जिन्होंने ऐसी हरकत की थी और आज कह रहे हैं कि देखिए ये हिंदुओं का वोट नहीं आएगा तो हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जल्दी जल्दी कुछ कीजिए। तो बताइए 2017 में आपके पार्टी ने जो किया ये भूला जा सकता है क्या? उस पर आपने क्या कहा था? आपने पार्टी उसी वक्त आपने पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, जरा मुझे बताइए और इस पर जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। अर्णव, एक तो हम अपनी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं और हिंदू नाम से चिढ़ते हैं। ऊपर से हम आपसे लड़ रहे हैं, तीसरा बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो हमारी स्थिति तो बड़ी विचित्र हो गई है। अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप कांग्रेस पार्टी, जिस दिन मुझे लगेगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपको जेल भेजा, तो आपने मुंबई थोड़ी छोड़ दी, अपनी आवाज़ बुलंद की। तो मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मैं धर्म और राष्ट्र के नाम पर जो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रास्ता गांधी का रास्ता था, महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजाराम कहते थे, मैं उस कांग्रेस के साथ हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो कांग्रेस पार्टी को माओवादी बनाना चाहते हैं और नक्सलवाद के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, या नॉन बिलीवर लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, तो मैं तो उनसे फाइट कर रहा हूं। तो यही मेरा धर्म है, मैं पार्टी क्यों छोड़ दूं? अच्छा, तो इससे क्या पार्टी उनकी है क्या? सवाल जो आपने तो अभी अपने पार्टी के नहीं आपने सवाल पूछा, मैं सवाल जवाब भी दूंगा, उल्टा सवाल तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं सवाल भी पूछूंगा, जवाब भी दूंगा, उल्टा सवाल करूंगा। और मेरा उल्टा सवाल आप जवाब ये है, बिल्कुल करिए। जितने दर्शक हैं वो देख लें कि इतने विवश हैं, इतने क्रोधित हैं ये व्यक्ति। दिस पर्सन इज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो एंग्री, पंकज शर्मा, शाजिया इल्मी, कि वो आज रिपब्लिक में आकर कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो परमवीर सिंह और सचिन वाजे से उनकी तुलना होनी चाहिए। कह दिया इन्होंने आज प्रोग्राम पर। ऐसा कहा? नहीं, यही कहा इन्होंने अभी, यही तो कहा इन्होंने। और क्या कहा? और दूसरी बात, जवाब तो दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णन। When a cow was taken to the middle of the road by a Congress leader and slaughtered, its neck was cut and the blood was flowing like a river through the street. What was the point being made by your party? What was the point, Shriram? We must get an answer. Today, 5 years later, you are saying we must get the Hindu vote. What was the point being made? Whose vote were you seeking then by killing a cow like that in the middle of the road? Answer me. Why are you quiet? Don't like my question? Why is there so much silence? Arnab, historically. See, Antony ji has said that there is a strong need to counter this bogus and perception from the public mind, which BJP, RSS affiliates, RSS syndicate has created. That is what he said. He didn't say. I mean, in 2014 you are stuck. Also, Viewers, is it stuck? 2014, Shriram wants to say something. Shriram is on the debate. I mean, as you rightly said, Arnab, they are definitely struck. They have definitely no words to talk to. I mean, those who painted Hindu as terrorists, and those who keep saying if they are talking about honesty on majority, what's their stand on CAA? Why are they for the Muslims? Why are they not for the sake of the country? What is their stand on UCC? If they think they are looking for the country, if they think they want the country to be safe, I mean, they are very selective. When it comes to all these major issues, they will only go behind the minorities. The day they realize that is not working, now they are focused that India is the biggest democracy. India is a pluralistic country. India is a collection of all religions. India is a beautiful country. It is a collection of all beautiful religions in which everybody is given equal rights. Yeah. As I said, India is a beautiful country. All religions. Some high polluting platitudes are being offered right now. Madam,
And I just want to ask this person. You are speaking. No, I'm asking you. I'm asking you. What is the need to have something like a Bharat Jodo Yatra? The presumption of which is that Bharat is not juda hua. And these highfalutin platitudes will not work because the politics of this country has been and it's a beautiful nation. It is a beautiful nation, which is a pluralistic nation. It is a nation with multiple religions. No, don't give me all these. Beautiful. These platitudes. No. I just want to tell. With us on the program is someone. With us on the program. Yes, what are you saying here? What are you saying? Sabir is on the debate. Sabir! Arnab, I just want to tell. Sabir, thank you, Sabir. What are you saying, Sabir? See, both the Congress and the BJP have forgotten the ideals of social justice and the constitution and the declaration before the Election Commission of secularism. Both only want to see votes in terms of majority and minority. What about the Congress? Today the Congress is saying it is pro-minority. What about the it is saying the Congress is saying we now need the Hindu vote because only with the minority vote we cannot win the election. That's what they are saying. Absolutely, that's it. Simple. Yeah, and they are saying things like, I don't know what he's talking about. He's saying Hindutva politics. He's saying Congress has practiced the politics. No. He's saying they are saying that if we don't get the Hindu vote, then Modi will return to power. So it's not like they really are feeling sorry for the way they have treated the Hindu community in the past. The point they are making right now, Pramod Krishnan, is अभी अगर हम किसी तरह से हिंदू वोट को नहीं लाए तो फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, बात यह है प्रमोद कृष्णन जी, आपने किसके तरफ इशारा किया? आप शर्मा रहे हैं, मगर मैं खुलकर बोलने वाला आदमी हूं और मैं उनका नाम लूंगा। प्रमोद कृष्णन ने आज जिस व्यक्ति विशेष के बारे में कहा कि हमारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, इन्होंने दो लोगों के बारे में सोचकर कहा। इन्होंने दिग्विजय सिंह के बारे में ज़रूर सोचकर कहा, और दूसरे व्यक्ति वो हैं, आप सुन रहे हैं ना, पंकज शर्मा जी, जिनके साथ आप परिचित हैं और जिनके साथ आपने काम किया है, आप उनके सलाहकार रह चुके हैं, और उनका नाम है कमलनाथ। क्योंकि कमलनाथ ने कहा था कि 90% मुसलमान वोट हमें चाहिए, और अगर 90% मुस्लिम्स डोंट वोट फॉर अस, if 90% of Muslims don't vote for us, then we could suffer a big loss. So Pankaj, नहीं, आप don't interrupt me. No, I'm saying something. I'm talking to Pankaj Sharma. Are you Pankaj Sharma? Can I have Pankaj Sharma on it? Pankaj Sharma, you understand what I'm saying? What did Kamalnath say? We don't need 80%. We need 90% of the Muslim vote to come and vote for us. Otherwise, we will lose. 2018. I think you were working with Kamalnath then. And now your party is saying we now need the Hindus to come for us. Have you decided what percentage? 20%, 30% or 90%? You think people forget so easily, Pankaj? लोग भूल जाते हैं। I'm saying, उनको याद दिलाने के लिए तो हम बैठे हैं ना। Why only Congress? नहीं, मैं why only नहीं, मैं आज आपके पार्टी के बारे में कह रहा हूँ। Support of majority community. हाँ? See, by playing carrot and stick tricks, by hook and crook, and through ferocious efforts of dividing the society to get Hindu votes, BJP could hoodwink the Hindu votes. So now, this is the time to expose them. That is what Antony ji meant. That is what but my dear friend, is Hindus saying. are not your vote bank. The Hindus are not your vote banks. You may have used or misused the Muslims or the Christians or the minority as a vote bank for the last 50 years. There could be Narendra Bhai Modi's vote bank. Today, nobody, no Hindu is ready to accept Congress. Congress never said that they are the vote banks. Going to get votes. Who treated them as vote banks? Who treated them as vote banks? Who treated Hindus as vote banks? Who started treating them as vote banks? BJP started treating them as vote banks. And to attract Hindu votes, they did everything. My dear friend, that is precisely I am society. saying. We are not here, the Hindus of this country, the majority population of this country is not your vote bank. This is not, we are, the poor Hindus are not here to get you into the gaddi pe bithane ke liye nahi baitha hua hai.
You need to understand what you have done. The entire Malabar Coast. Okay, so they are BJP's vote bank. The number of places in this country, the BJP's vote bank. Pankaj. There are Pankaj, 1 minute. Pankaj. Hindus in India. Pankaj. 92 crore, 91 crore voters went to the polling booths in 2019. Pankaj, are you calling Hindu voters? Pankaj, are you calling Hindu voters as silly? Huh? Assuming that Hindu voters will forget. Do you think Hindu voters will forget? Now listen to me. Just quietly think and listen to me. You are saying we are not pro-Hindu, we are not pro-Muslim, we are very secular. But PKD, 1 minute, please. PKD, 1 minute. PKD, 1 minute. Can the audio go through? I can neither hear him nor I can be heard. PKD, 1 minute. PKD, listen to me. Ab idhar baithe hai na, this person is sitting next to you, Acharya Pramod Krishnan. I think he is going to resign very soon from the Congress. But before he resigns, I want him to at least confess. He has resigned already. Mentally he has resigned, but one day he will come and resign live on my program. But I want to ask him. 1 minute. I want to ask him. बताइए मुझे, ये जो सेक्युलर मीटिंग्स होती हैं आपके पार्टी में, सबको आप लोग धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते रहते हैं आप। ये बताइए मुझे कि 3 अप्रैल 2014 को आपके पार्टी के उस समय के सर्वोच्च नेता और यूपीए के चेयरपर्सन और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बीच में कौन सी धर्मनिरपेक्ष मीटिंग हुई थी 2014 के चुनाव के ठीक पहले? जरा हमें बताइए ना, हमें बताइए कि कौन सी धर्मनिरपेक्ष बातें हुई थी। बताइए हमें, जो आप आज कह रहे हैं नहीं हमको हिंदू वोट चाहिए, माइनॉरिटी वोट से काम नहीं चलेगा, अगर 90% माइनॉरिटी वोट फिर भी नहीं चलेगा, हमें हिंदू वोट चाहिए। ये ऑन डिमांड है क्या? ये कोई हिंदू वोट कोई ऑन डिमांड सर्विस है? ये हिंदू वोट कोई फूड ऐप है कि आप बटन प्रेस करेंगे और आ जाएगी? इनका लुलू मॉल में जाके मिलेगा हिंदू वोट, ऐसा लगता है। चुप क्यों है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी? बोलिए आज मौका है, बोलिए खुलकर। अर्नब आए किलो में नहीं बोलिए, नहीं आप डिस्टर्ब मत कीजिए, इनको बोलने दे। पंकज, पुट हिम ऑन एयर प्लीज। या बोलिए। सवाल का तो जवाब ही नहीं। देखिए अर्णब गोस्वामी जी, आपने 2 सवाल उठाए। पहला सवाल उठाया कि जिस समय गाय के बछड़े को काटा गया तो वो एक बहुत बुरी बात है। मैं आज भी कह रहा हूँ गौवध नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं गौवध? नहीं किसने? नहीं रास्ते में एक मिनट, भारत सरकार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता, वंश को काटना, भारत सरकार ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक कांग्रेस रूल स्टेट में एक गाय के बछड़े को रास्ते के बीच में जाके उसका गला काटकर उसको मार डाले और उस पर राजनीतिक प्रोटेस्ट करे। आप क्या बात कर रहे हैं प्रमोद कृष्णन जी? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों 8 साल से बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में गौवध पे कानून क्यों नहीं लाती? उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में गाय आपकी माता है और आसाम में गाय माता क्यों नहीं है? मणिपुर में गाय माता क्यों नहीं है? मेघालय में गाय माता क्यों नहीं है? त्रिपुरा में गाय माता क्यों नहीं है? वेस्ट बंगाल में गाय माता क्यों नहीं है? गौवध पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाइएगा, हम आपका समर्थन करेंगे। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, साजिया अली, आप हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं। आपको मालूम है हिंदुत्व क्या है? आपको मालूम है हिंदुत्व क्या है? पूरी तरह से उसके सामने झुकना हो या हमेशा की तरह, जैसे हामिद अंसारी ने मानव संसाधन को पूरी तरह से मुसलमानों के लिए करने के लिए बात कही है, आपने सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। को पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं है, किसी मुसलमान को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं है। तो आपको क्या पहलू खान को निहत्ते पहलू खान को मारने का नाम हिंदुत्व नहीं है। आप हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं। हिंदुत्व के लिए आपने क्या किया? मैं बोलना चाहता हूं आपसे, मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे, क्या किसी निहत्ते अखलाक को मारने का नाम हिंदुत्व है? क्या किसी पहलू खान को मारने का नाम हिंदुत्व है?
क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम और सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप चाहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपको मैंने सवाल क्या पूछा था भूल गए। वैसे आप इतने बड़े भुलक्कड़ नहीं हैं, आपको बिल्कुल पता है कि मैंने क्या सवाल पूछा था। और मेरा सवाल सिर्फ एक ये था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जरा हमको बताए कि कौन सी धर्मनिरपेक्ष मीटिंग होती थी वाड्रा परिवार, सोनिया गांधी और शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बीच में 2014 के इलेक्शन से पहले। आपने उसका जवाब नहीं दिया और दूसरे डायरेक्शन में पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं दे रहे आप जवाब, कतई जवाब नहीं दे रहे, आप नहीं दे रहे। आई विल नॉट लिसन टू यू। मस्जिद के अंदर घुस के इमाम साहब से जो बात करते हैं, जिस तरह मोहन भागवत ने मुस्लिम उलेमाओं से बात की, क्या भगवत जी बताएंगे? And ladies and gentlemen, my question as I go into the break is, do you think just now going and saying we need the Hindu vote now, we need the Hindu vote as a straightforward political ploy will be accepted by the people of this country? And viewers on the other side tonight, I promise to you that I'm going to be coming back with a whistleblower in one of the most sensational financial scams. This is the case in which Chanda Kochar has been arrested, Venugopal Dhoot has been arrested, and I'll tell you why I think this could be very, very political in a few minutes.